वेलकम बैक टू माय डियर फ्रेंड्स टू द टेक सिविल लर्निंग। आप सभी को टेक सिविल लर्निंग में स्वागत है। द मेन मोटो ऑफ आवर चैनल इज टू प्रोवाइड द प्रैक्टिकल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली. So without wasting times, let's start the today new series, that is fluid mechanics. As the fluid mechanics is the most vital subjects in the engineering, in the civil engineering field. So without wasting times, let's start. So my dear friends, for the further informations, if you have not subscribed my channel, please subscribe it and share it to your friends so that they can get help. I will provide you proper handwritten notes so that it enhance and build up your knowledge. So let's see. Here the first need to know is fluid mechanics, right? My dear friends, the first terms to be understand is what is fluid. Fluid actually में है क्या? My dear friends, fluid is nothing but a substances. Remember, a substance is एक ऐसा substance that can follow, ठीक है, जो follow हो सकता है, right? And substances that can follow. Here the substance is nothing but any matters that is having some space, volume, that is substances, and the follow means nothing that can relatively change their position. ठीक है, कोई सा भी substance, ठीक है, कोई सा भी means substance है जो अपना पोजीशन चेंज करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. जैसे वाटर हुआ, आप इसको मीन्स डिस्टोर्ट कर दो तो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है. सो दैट इज नथिंग बट द फॉलो. सो हेयर फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फॉलो. Similar, fluid mechanics is the branch of science in which will deal about the forces and the pressures acting on the fluid and its behavior. ठीक है, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड का बिहेवियर, उसमें एक मीन्स जब फोर्स और प्रेशर लगेगा तो किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा, विल स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो fluid mechanics is the branch of science or the branch of mechanics in which we will study about the effect of forces and pressures on the fluid. So without wasting time, hope fluid क्या है, means fluid is means liquid and the gases both are fluid because both can follow. At the same time liquid is not a means liquid, solid is not a fluid. जो solid है वो fluid नहीं है, ठीक है, जो liquid और gaseous है वो fluid है. देखिए सॉलिड में और लिक्विड में फ़र्क क्या होता है, राइट. मीन्स once we applied an external force on the fluid it continuously starts means following, right. मान लीजिए कि आप एक बाल्टी में पानी है, आप उसको मीन्स क्या किए, मीन्स ज़मीन पे गिरा दिए, ठीक है, तो क्या होगा, पानी कंटिन्यू फॉलो होता ही रहेगा. आप अब उसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक्सटर्नल फोर्स अब लगाओ, ठीक है. once when you apply external force once on the fluid it continuously starts flowing. But what happens in the case of solid, we have to apply the external force means in time to time interval, right, so that it can move, right. So that's why it is called that, means it can deforms continuously, right. It can under the small action of shear stress or even if the small magnitude, हम लोग means small magnitude it can start deforming, but in the case of solid it can't deform that of the in compare of the means liquid. So this is the means general introduction of the fluid. आप means उम्मीद करता हूँ आपको fluid क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है. जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर कोई सॉलिड बॉडी को अगर डिफॉर्म करना है तो हम लोग उसमें कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू उसमें मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, ठीक है. बट इफ़ यू नीड टू डिफॉर्म एनी मीन्स फ्लूइड, we just need a small magnitude at once, then it means continue deforms in its own way. So let's talk about the properties of fluid. My dear friends, knowing the properties of fluid is very important for the further informations. This gives the behaviors, means how the fluid behaves, right. So understanding the properties of fluid is very essential. So let's understand the properties of fluid, some of the properties of fluid, right. So first we will understand the means density or the mass density. My dear friends, density is also known as mass density, right. Density is nothing but the mass per unit volume. देखिए अब इसको इस तरीक़े से समझिए कि मान लीजिए एक कोई बॉडी है, ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस वन इज हैविंग बॉडी, राइट. मीन्स मास मीन्स क्वांटिटी, राइट. कीप इन माइंड मास मीन्स हाउ मच क्वांटिटी इन अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है, जो दिया हुआ वॉल्यूम है उसमें कितना क्वांटिटी है, राइट. मान लीजिए एक मीन्स बॉडी है, इसमें अगर मीन्स एक मीन्स सॉलिड मीन्स या तो मीन्स लिक्विड जिस टाइप का बॉडी इमेजिनेशन कर है,
means more mass means more density, right? If the density of any body is more, it means mass of that section is more. If the mass of that section is more, means the molecular attraction between that material is more, right? means that material is more compacted, क्या वो घना होगा, ठीक है. आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि मीन्स एक मीन्स शॉर्ट फुट होता है ना, ठीक है. आप शॉर्ट फुट अगर मीन्स यू नो द शॉर्ट फुट इज वेल compacted, right? means it have the means molecule attraction between the short foot is very high, right? So means its mass is high, right? So the mass represent the quantity, remember mass represent quantity and the volume represent what, space. So if the density is high means mass is also high. If the density is low, it means mass is also low. If the mass is low, means molecular attraction between the means that one substance is very low. That means it is not the high compacted, it is loosey type of मीन्स मटेरियल, राइट. जिसका भी डेंसिटी कम होगा वो क्या होगा, एक लूजी टाइप मटेरियल होगा, ठीक है. डेंसिटी हाई रहेगा मतलब वो उतना करक रहेगा, ठीक है, उतना कड़ा रहेगा, ठीक है. तो कोई भी सबसे अगर ज़्यादा करक है मीन्स ज़्यादा हार्ड है, देन मस्ट अंडरस्टैंड द मोलिकुलर अट्रैक्शन हाई होगा. अगर मोलिकुलर अट्रैक्शन हाई होगा देन ऑफ कोर्स उसमें डेंसिटी हाई होगा. सो जो डेंसिटी का ऐसा यूनिट है, अब पता है मास का जो है वो केजी है, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब. सो केजी पर मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट. At the same time, the CGS unit is gram per centimeter cube. My dear friend, the standard density of water is means 1000 kg per meter cube. देखिए मीन्स अगर आप किसी को पूछिएगा कि मीन्स जो मीन्स डेंसिटी का मीन्स वाटर का डेंसिटी कितना होता है, ऑफ कोर्स बोलेगा 1000 kg per meter cube. ये कहना गलत है, ठीक है. मीन्स we need to tell that the means 1000 kg per meter cube at 4 degrees Celsius, means at 4 degrees Celsius the density of water is maximum. If you exceed the 4 means if you exceed means the 4 degrees Celsius, of course the value means density of the water means of course it will decrease. If you means go through below of the 4 degrees Celsius, then also the density of water will decrease. So the means density of water is maximum or the 1000 kg per meter cube at the 4 degrees Celsius. 4 degree is STP, standard means temperatures and pressures, right? So 4 degree, it means at the 4 degree, that means temperatures means density of water is 1000, right? Now we need to know the dimensions, right? So dimensions, the mass means mass dimension is m and the volume dimension is LQ, right? Means volume is represented in length. So mass by length. So ultimately we can write m, and if you substitute this in it is in divide form per form, then if you can means if you go through up, then it will represent that is -3. So m l -3 is the density means dimensions of density. Now here the next term, weight density. We have already discussed about the means density. Now the weight density. Here that density is also known as a specific density, right? Sorry, mass density. Here that is in mass density, mass per unit volume. In weight density, weight per unit volume, right? Here the weight per unit volume. So the weight per unit volume is weight by volume. Here the weight is nothing, आपको पता है weight is nothing but the force which acting due to gravity, right? Weight is nothing but the force acting due to gravity, or we can say that the gravitational pull forces exerted by the planet or any substances, ठीक है. जो weight होता है वो means gravitational force के कारण होता है, ठीक है. So weight का जो means ऐसा into the Newton and volume का meter cube. So we can write this one weight, that weight by volume. As you know, weight is equal to that is mass into means g, acceleration due to gravity. So mass into g is weight and that one is v. So mass by volume, that is mass by volume is nothing but the means density. So rho g. So gamma is equal to rho g. So this is the relation between mass of density or mass density and the weight density. In some of the questions क्या होता है, कोई क्वेश्चन में क्या होता है, आपको मीन्स क्या होता है कि मास डेंसिटी दिया रहेगा, अब आपको जरूर बोलेगा कि वेट डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए. सो वी नो द वेट डेंसिटी इज इक्वल टू mass density into acceleration due to gravity from the above figures. So it's very easy to understand. Mass density means mass per, means weight per unit volume.
So let's see the dimensions of these ones. So if we talk about the dimension, that is in newtons, right? Here the newtons, and that one volume is meter cube. So in the newtons we can write that one's mg, right? Here m and g, the mass into gravity. M means mass can be written as m, at the same time g can be written as 1 by t squares, right? So g is nothing but the means meter per second square, right? Here you can see acceleration due to gravity is meter per second squares. So means जो g होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. द मीटर का क्या यूनिट होता है? लेंथ. सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? टाइम स्क्वायर. और इसका क्या? एल क्यू. सो अल्टीमेटली हम लोग इसको लिख सकते हैं एम एल राइट बाय टी स्क्वायर बाय एल क्यू. सो एम एल right means l cancel, right? This 1l and l will be cancel, then m into t to the power minus 2 and l to the power minus 2. So this is the dimension of the weight density. उम्मीद करता हूँ weight density is equal to space means mass density into gravity. Now we have already discussed about the mass density means weight density. Now we'll talk about the specific gravity, or it is also known as relative density. A specific gravity is also known as relative density. My dear friends, a specific gravity especially gives the relation between different types of fluid, right? क्या करेगा ये? different types of fluid standard fluid से compare करता है, ठीक है? It gives that means it is the ratio of density of fluid to the density of a standard fluid, right? And the standard fluid is nothing but the water. So density of a standard fluid at STP, a standard temperature and pressures. So the density of water is 1000, right? So here the specific gravity is defined as the ratio of means the ratio of density of fluid to the means density of a standard fluid. सो अगर यहाँ से मान लीजिए कि मीन्स कोई भी अगर मीन्स इट्स वेरी इजी टू डील इन द नोमेरिकल. इन सम ऑफ द नोमेरिकल व्हाट हैपेंस, you means you will get the means specific gravity, right, and you need to calculate, and you must need to calculate the means specific gravity of other materials, right? Means other metals, other means other fluid, the specific gravity of oil, right, the specific gravity of grease. So we just need to means multiply that one, the specific gravity, into the weight density of fluid. Means standard weight density of fluid is nothing but the water 1000. So 1000 into, if this one is given, then you can easily get the density of fluid. So generally a specific gravity shows the relation between different types of fluid. So here you can see that for the liquid, a specific gravity, right, the density of fluid by the density of water. Similarly for the gas, the density of gas by density of a standard gas, that is standard gas is nothing but the air, that is 1.21 kg per meter cube. So this is all about the specific gravity. So my dear friends, we have already discussed the three properties of fluid. So the next properties is surface tension. Surface tension is very interesting, and means we can means we means if you understand this contents, we will be really happy, right? मीन्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीन्स कंसेप्ट है. आप चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, हैव यू एवर इमेजिन व्हाई द मीन्स ड्रॉप ऑफ द वाटर इज ऑलवेज स्फेरिकल? ठीक है, आपने कभी इमेजिन किया है कि जो वाटर का ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकली क्यों होता है? ठीक है, वो क्यों अलग शेप में नहीं होता है? क्या होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. ये सरफेस टेंशन का एक कारण होता है. ठीक है, जो मान लीजिए कि एक बाल्टी में पानी है, जस्ट इमेजिन अ बकेट ऑफ वाटर्स, राइट? सो व्हाई डज वाटर्स डज नॉट कम आउट, राइट? बाहर क्यों नहीं उछल जाता है? ठीक है, और चाहे तो मीन्स चेक करने के बाद वो फिर से आसानी से क्यों स्टैटिक मोशन में आ जाता है? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल ड्यू टू द सरफेस टेंशन. तो चलिए सरफेस टेंशन को इस मीन्स इस तरीके से समझते हैं. मान लीजिए कि ये एक बकेट है, ठीक है, ये एक बकेट है, ठीक है, इसमें मैं पानी भर के रखा हूँ. जस्ट इमेजिन दिस इज अ बकेट ऑफ हैविंग वाटर्स. So my dear friends, what happens? Suppose this one is means any point in the surface means inside the water. जो B है एक means कोई point है पानी के अंदर. So what happens, my dear friend? The force acting all these means directions are in equilibrium, right? जो क्या होगा? equilibrium state में होगा. ठीक है, क्योंकि जो molecular attractions between all these means sides, neighboring sides of होगा, वो means इसको move नहीं करने देगा. ठीक है, मीन्स समझ रहे हो ना कि आप मानो एक बाल्टी में वाटर है, सॉरी एक बाल्टी में वाटर है
और उसमें जो मीन्स जो एक बीच का जो मीन्स मान लीजिए कि एक बीच मीन्स बीच में मैं बी पॉइंट लिया, आई हैव इमेजिन्स a B point in the middle of that ones. So this ones means does not allow this types of means the neighboring molecule does not allow this B point to move, क्योंकि इसको चारों तरफ से इसको मीन्स पकड़ के रखा है, ठीक है, इसको मूव नहीं करने दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अगर इस फ्री सरफेस पे बात करें, ठीक है, जो बाहर का सतह है उस पे बात करें, इधर क्या होगा, जो मीन्स इधर इसका मीन्स फिनोमेना अलग है एंड इसका फिनोमिनल अलग है, तो क्या होगा, जो मीन्स व्हाट हैपेंस, these ones this molecules will attract this upper surface to the downward, ठीक है, उसको नीचे की तरफ सिकोड़ने का कोशिश करेगा, ठीक है, जो मीन्स सरफेस जो फ्री सरफेस पे है वाटर उसको नीचे की तरफ सिकोड़ने का कोशिश करेगा, ठीक है। सो क्या फ्री सरफेस क्या होता है, जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है, ठीक है, शियर स्ट्रेस जो होता है मीन्स फ्री सरफेस पे वो जीरो होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब लग रहा होता है, ठीक है, जो कोई भी मीन्स फ्री सरफेस समझ रहे हो ना, कि कोई भी पानी का ऊपरी सतह, ठीक है, मीन्स द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर्स। सो व्हाट हैपेंस, द टॉप मोस्ट दिस लेयर्स इज मीन्स फील somehow means the force exerted inward, right? So that phenomena is nothing but the surface tension. So here you can see a free surface, right? ऐसा free surface of liquid behave like a stretching member, right? Means this free surface behave like a stretching member because the molecules of these attract inwards, right? So free surface of fluid behave like a stretching members and it try to minimize, ठीक है, जब inward इसको खींच रहा है then it try to minimize means up to the maximal possible extents, क्या होगा, means see this one is very simple, so we can define a free surface of a liquid behave like a stretching members, right, where a member try to minimize its area up to the maximum possible unit, ठीक है। आप इमेजिन करो, इमेजिन अ वाटर ऑफ अ बकेट ऑफ वाटर्स, then means at the top surface or the free surface it feel like a stretching members because inside molecular the water will attract it to the downward, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, मीन्स जस्ट अगर आपको सरफेस टेंशन रियल लाइफ में देखना है तो क्या कीजिए, एक गिलास में जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर फुल ऑफ वाटर, राइट, एंड जस्ट स्लोली गिव अ टिप मीन्स स्लोली फुल ऑफ योर वाटर्स, then somehow what happens up to the some height means certain height up to what happens the water cannot follow, right, means आसानी से उस पूरा एक गिलास में पानी भरिए, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा हाइट तक, ठीक है, लगभग 2 mm तक हाइट तक क्या होगा, पानी ग्लास से ऊपर रहेगा, राइट, द वाटर्स इज ऑफवर्ड टू द मीन्स हाइट ऑफ द मीन्स ग्लास, राइट, जो ग्लास से थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है, दैट मीन्स देयर इज मीन्स द मोलिकुलर अट्रैक्शंस means the molecular attraction between the surface of means free surface of the waters and the insides molecules means pull the water to the inside, right, so that's why it's difficult to move, right। और अगर इसको अगर और आसानी भाषा में देखना है then आप एक means take of means a bucket of water and drop it on the surface, then what happens, it forms a spherical shapes, this is due to because of the surface tension is try to minimize its area due to the molecular attraction between the fluid, so this property is nothing but the surface tension, so surface tension is mathematically represented as force per unit length, so it can be also defined as the force per unit length is surface tension, so its SI unit is Newton per meters। so my dear friends, इसको और समझने के लिए क्या करते हैं, just imagine one spherical shape, right, थोड़ा इसको और phenomena को समझते हैं, just imagine a spherical shape but due to the surface tensions this will decrease, right, क्योंकि इसका जो मीन्स surface tension का behavior क्या है, मीन्स it minimize its area up to the possible limit, ठीक है, तो इसका कारण क्या हुआ, कुछ इसका मीन्स सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में चेंज हो गया, then of course there is the means what you call deformations taking place or there is the displacements, so work done in contracting the free surface, right, यहाँ पे क्या एक work done हुआ because stress into displacement हुआ, so work done is stress into displacement, that is displacement मान लेता है कि x है, so surface tension is equal to force into length तो है into del L by L, ठीक है, जो del L है वो change in length हुआ, ठीक है, by then क्या होगा Newton per meter by meter squares, so it is known as surface energy, so surface tension is the surface energy per unit area, surface tension is the surface energy, Newton per meter is nothing but the energy and the per meter square area, so this is all about the surface
टेंशन। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। Now we'll talk about the capillary, right? Means it is also very familiar to our means real life, day to day life. Just imagine, इसको इस तरीके से समझते हैं, just imagine you have a bucket of water, right? You have a bucket of waters. Take a bucket of water and take one pipe, cylindrical pipe, right? Means you can take it, right? Means electrical supply pipe, right? Just take it, the pipe, and what you can pour it in the मीन्स बॉकेट ऑफ वाटर्स। देन व्हाट हैपेंस, अगर आप उसको मीन्स बॉकेट ऑफ वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, मीन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो अपवर्ड, राइट। ठीक है, मीन्स क्या होगा, उस पाइप में मीन्स ऊपर की तरफ आएगा, राइट। एज यू कैन सी दिस वन इज अ बॉकेट ऑफ वाटर एंड दिस वन इज अ मीन्स अ पाइप, राइट। सो इफ यू इंसर्ट इन द बॉकेट ऑफ वाटर्स, देन व्हाट हैपेंस, ऑफ कोर्स वाटर विल मूव अपवर्ड, राइट, राइट। So this is the means relative height of waters. So means some of water will move upward up to the certain limit. But as you can see, my dear friends, the water cannot be perfectly like this, right? So it have some like this. हम लोग इसको आसानी से देखते हैं, वाटर जो होगा ऐसे मीन्स एक शेप बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द कैपिलरी। सो द फेनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होगा, ये राइज होगा, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, ये फॉल होता है, ठीक है। फॉल किस कंडीशन में होगा, जब नॉन वेटिंग लिक्विड रहता है। वेटिंग लिक्विड, इन वेटिंग लिक्विड इट मस्ट राइज, एट द सेम टाइम्स इन नॉन वेटिंग लिक्विड it may not rise. Now you must have question arise in your mind, what is wetting liquid and what is non wetting liquid, right? जैसे glass and water क्या है, wetting liquid है, means here wetting liquid is nothing but in which a cohesion attractions means cohesion is greater, sorry adhesion is greater than cohesion, right? जो adhesion होता है वो greater than means कोहेशन होता है, ठीक है। एडहेशन से कोहेशन को होप आपको पता होगा एडहेशन कोहेशन क्या है। सो दैट इज वेटिंग लिक्विड। सो इन वेटिंग लिक्विड इज एग्जांपल ऑफ वाटर एंड ग्लास। सो इन दिस टाइप्स ऑफ द वाटर मस्ट मूव्स अपवर्ड। सिमिलरली इन नॉन वेटिंग इज एग्जांपल ऑफ मर्करी and the glass. In that ones it does not move upward, it decreases its height. So this is the phenomena observed. So this phenomena is rise and fall of the liquid surface in the small tube, right? As you can see, this one is small tubes relative to the adjacent level, right? This one is relative to the adjacent levels when the tube is held vertical. So this is nothing but the what, capillary. So इसको means और study करते हैं। So just imagine this means is a capillary tube. So as I have told you that the means the surface of the waters in the tube seems like in this shape, right? Means in this shapes, this is known as, this is the in these shapes. So we have to find out the theta value, right? So my dear friends, what we will do, we will draw one normal line, right? One normal to the means what we call the side of the tube. So we will draw one normals to the side of the tube, and we will draw one means tangent with respect to this side of the tube. That angle is nothing but the theta, right? This one's and this one's is r, right? So capillary rise and the diffraction is given by h is equal to this one's, how much rise it is, h is nothing but see this one's h, right? From here to here how much rise, or from here to here how much decrease. So h is given by 4 into surface tension, so cos theta rho g into d. So means the diameter means the height of the means tube is always means depend upon the rise of the capillary tube, always depend upon the diameter of the tube. If the diameter is less, then of course the height of the rise or fall may be high. If it is vice versa, so diameter of rod, sorry my dear friends. So my dear friends, sometimes in some of the numericals you did not have given the theta value, so it is given the pure water. So in the pure water theta is assumed to be 0, and for the mercury and glass with the theta value assumed to be 120. So capillary rise, here the angle is made by the tangent drawn on the meniscus. Meniscus is nothing but the formations of that ones, means here this one is meniscus, my dear friends, this one is meniscus, right? Means it formed the surface of the liquid in the tube formed like this one. So this is known as meniscus. So this is all about the today topics. In next series we will discuss about the means part 2 properties of fluid, as it is very important. So उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो।
ठीक है, अगर कोई भी डाउट है देन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट I can resolve your doubt. Thank you for watching. Don't forget to share it to your friends so that it can motivate me. So thank you.